Hello students, welcome to Krishnas Maths. Today we'll start the second video of matrices. Matrices ର second video start କରିବା. Let's do some multiple choice questions or some short questions. The first question is, देखो first question कौन देची? Write the matrix product A into B. कौन दरकार आपको? Matrix product A into B when A and B both are given. यदि A B दुईटा जगह दिया है, matrix product A into B दरकार, right? A into B दरकार. Given, therefore A into B is equal to basic multiplication. देखो 2008 रास्ते लगा से basic multiplication. A is 1 2 3 4 and B is 2002 multiply कर दो. कैसे multiply कर दो? First row into first column, मतलब 1 into 2 into 2 into 0. तो 1 into 2 will be 2, 2 into 0 will be 0. Then first row into second column, 1 into 0 plus 2 into 2. Second row first column, 3 into 2 will be 6, 4 into 0 will be 0. Second row second column, 3 into 0 will be 0, 4 into 2 will be 8. And this is what your answer is, 2, 4, 6 and 8. एकदम बेसिक क्वेश्चन, किसी नहीं है इतने किंतु एग्जाम रे आस्ते से इतने आनले आपन मन पाको. Next question, what the question is, if A equal to this 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 and 12 minus 3 1 minus 5 and 17, what is the order of the matrix? Order of the matrix माने केते रो अछि और केते कॉलम अछि, केते रो अछि देखा जाउ क्लियरली 3 रो अछि. Order of the matrix is, order of the matrix is number of rows multiplied by number of columns. What, how many rows are there? 3 rows are there. How many columns are there? 4 columns are there. So the order of the matrix will be 3 into 4. याकू 12 लिखिए नहीं, 12 लिखिए नहीं याकू. This will be like, this is a representation to know how many rows and how many columns of a matrix has. So how many rows are there? 3 rows are there. And how many columns are there? 4 columns are there. Now write the, this is the first one, and the second part is write the value of A13. What do you mean by A13? प्रथम जो 1 अच्छी सेटा होची रो इंडेक्स, माने प्रथम रो, फर्स्ट रो. 3 माने थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. व्हाट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम? दिस इज 19. देन A21, 21 माने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम रे केते अछि 35, so this is equal to 35. Then A23, 2 second row, 3 third column. Second row third column, what is that? 5 by 2. And second row fourth column, and what is second row fourth column? Second row fourth column will be 12. Second row fourth column will be 12. So this is your answer. देखो कितने easy question आस्ते हैं एग्जाम में. रिप्रेजेंटेशन जानना तो कर परिवेन किसी नहीं क्वेश्चन पर. Now write the matrix product A into B if A equal to this, B equal to this. Again came in 2008 examination. Now look, product you need to find A into B. Now look at the next question. Question 4. If A is equal to 1 2 0 0 1 2 minus 2 5 3 and verify A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. Look, what symmetric matrix is? If A is equal to A transpose, A is equal to A transpose, जे कोन से मैट्रिक्स आपन दिया है, जे मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज बाहर करन, और जदी A और A ट्रांसपोज दुटा जगह इक्वल हेगला, देन A is symmetric. This is the basic theory. Yeah? A is symmetric. And if A is equal to minus A transpose बाहर करन तो सेतर माइनस साइन रो मल्टीप्लाई करन तो जदी इक्वल हैला A सहित, देन A is skew symmetric. एमती चेक करिवे. Okay. Now look, fourth is verify A plus A transpose. Now look, given A equal to, given A is equal to 1 2 0 0 1 3 minus 2 5 and 3. Remember, for any square matrix, A plus A transpose is always symmetric and A minus A transpose is always skew symmetric. This is a property. किंतु एटी तुमको प्रूफ करियो कहिछि हो, हैं? Find A transpose. A transpose केंति बाहर करी? रो कॉलम बन जो. Rows are interchange into columns. 0 1 3. Third row बनिबो third column, minus 2 5 और 3. A and A transpose. दुटा जको A और A transpose हेगला, ऐड करो A plus A transpose. ऐड करते 1 plus 1 होगा 2, 2 plus 0 will be 2, 0 minus 2 will be minus 2, 0 plus 2 will be 2, 1 plus 1 is 2, 3 plus 5 will be 8, minus 2 plus 0 will be minus 2, 5 plus 3 will be 8, 3 plus 3 will be 6.
Now find the, therefore A plus A transpose यारो ट्रांसपोज बाहर करिए जदि इक्वल हैला A plus A transpose सहित देन सिमेट्रिक राइट. तो रो विल बिकम कॉलम. तो फर्स्ट रो बनिगला फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनिगला सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनिगला थर्ड कॉलम. देखो सेम आसला. therefore A plus A transpose is a symmetric matrix. Is a symmetric matrix. First part sarla. Now find the value of A minus A transpose. What is A minus A transpose? 1 minus 1 will be 0. 2 minus 0 will be 2. 0 minus of minus 2. Anything करते हैं ना minus. 0 minus of minus 2 will be plus 2. 0 minus 2 will be minus 2. 1 minus 1 is 0. 3 minus 5 will be minus 2. Minus 2 minus 0 will be minus 2. 5 minus 3 will be plus 2. 3 minus 3 will be 0. This is A minus A transpose. Now find the value of A minus A transpose. सेम जदि न होला माइनस साइन रे मल्टीप्लाई करके चेक करिए. कौन डेफिनेशन? A equal to minus A transpose हेबाको पड़ियो राइट. सो दिस इज 0 2 2 minus 2 0 minus 2 minus 2 2 0. नाउ चेक विद दिस 2. ये दिखा इक्वल नहीं ना, एक कोटा नेगेटिव साइन रे मल्टीप्लाई करो. माइनस ऑफ A minus A transpose दिस इज इक्वल जत नेगेटिव रे मल्टीप्लाई करो ए सब पॉजिटिव हो गला. minus 2 0 minus 2 0 2 2 minus 2 0 minus 2 and minus 2 2 and 0. Now this is equal to this A plus A transpose. Therefore A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Is skew symmetric. Okay. तो एमती टाइप क्वेश्चन ये क्वेश्चन आसला 4 मार्क 2019 रो रिसेंट क्वेश्चन 4 मार्क आसला. वन मोर क्वेश्चन. इफ A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस एंड C इक्वल टू दिस, तीनटा मैट्रिक्स आपन दिया है छी. A plus B minus C बाहर करियो तापर तारा ट्रांसपोज बाहर करियो. लेट अस सॉल्व दिस. A plus B minus C रो ट्रांसपोज फर्स्ट कौन करियो? A plus B minus C बाहर करियो. A 2 3 minus 1 this is A. B इतरे ऐड करिवे प्लस करिवे ना 4 minus 1 3 0 2 1 A plus B minus C. C is 2 minus 3 0 and 1 4 5. फर्स्ट थीटा मैट्रिक्स को ऐड करिवा, थर्ड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करिवा. 1 plus 4 is 5. 5 minus 2 will be 3. Now 0 minus 1 will be minus 1. Minus 1 plus 3 will be 2. Then minus 2 plus 3 is 1. 1 minus 0 will be 1. Now 2 plus 0 will be 2. 2 minus 1 will be 1. 3 plus 2 will be 5. 5 minus 4 will be 1. And minus 1 plus 1 is 0. 0 minus 5 will be minus 5. 3 to 1 and 1 1 minus 5. So this is A plus B minus C. Now the transpose of this A plus B minus C. So the transpose is first row will become first column and second row will become second column. This is A plus B minus C the transpose. Now the second part. What is the second part is? B transpose minus C transpose. What is B transpose? B row column को उल्टा कर दियो. So this is 4 minus 1 3 and 0 2 1. This is B transpose minus C transpose. C row column को उल्टा कर दियो. 2 minus 3 0 and 1 4 5. Now 4 minus 2 will be 2 and minus 1 plus 3. Minus 1 plus 3 will be 2. 3 minus 0 will be 3. 0 minus 1 is minus 1. 2 minus 4 will be minus 2 and 1 minus 5 is minus 4. So this is your last question. Correct? तो एमती टाइप के बहुत इजी क्वेश्चन मैट्राइसिस रे आछी राइट. या को प्रैक्टिस करबे ठीक रे प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए चेष्टा करिए सब बस. तो भल कंटेंट आपको मिल लास्ट मोमेंट आपको बहुत हेल्प करियो रिवीजन करिया पाए. पूरा टेक्स्ट बुक रिवीजन करिया बदल रे इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग ऑल द टेक्स्ट बुक ना टेक सम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए थे और टेक ऑल दोज क्वेश्चंस जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सही क्वेश्चंस को मु एक्युमुलेट करी आपन पाखु नै गया राइट. तो ए क्वेश्चन उडा प्रैक्टिस करिवे चैप्टर खत्म हो गई. सो बी विथ मी, बी विथ माय चैनल.
If you are new to the channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so to get all the latest updates, and join the Telegram group also to get all the PDFs uploaded in the group.